Hello everyone, welcome back to my YouTube channel XAT Turning Problems into Solutions. This is me Priyasha Das, and today we are up with the most awaited video maybe because I've got so many DMs for it and also so many comments also, especially Ashad was waiting for it for a very long time, so there's a shout out for you. We always want some kind of guidance and some kind of proper strategy to crack any exam, and so the first step is of course to make a planner for yourself. Now, this is the place where some people find it difficult to to do self-study because uh, people at coaching give you aims and daily targets and things like that, and that's the reason why people go towards coaching centers. But yeah, if someone is doing it for you, you can definitely take the help and come out with flying colors. So I have made a 60 days planner for you people, keeping in mind that some of you might also be preparing for the CAT examination. So even if you're preparing for the CAT examination, the thing which I have made right now for you will be completely beneficial. And remember that please don't fall in the trap of the coaching centers offering you 1 month crash course for the XAT examination and things like that. This crash course is designed only for the people who have, prepared for the CAT examination very well in advance. And so now they have to just check the few sections which are new to that. So, starting off quickly, I have divided the entire schedule into five, six groups. Okay. So I'll be telling you how to go around with this. The first thing which you need to keep in mind is the amount of time you're going to spend each day. So I am expecting you to put in at least 5 hours a day, at least. Please remember this number is at least, not at most. So at least put in 5 hours a day. Now, even if you're a working professional or you have dropped a year or you are studying in the final year, whatever you're doing, you have to find out 5 hours at least because only 60 days are left. So we can't go at a much slower pace. If you would have, you know, decided to do it at a slower pace, anyone who is preparing for the next year examination and watching this video right now, you can start earlier and reduce this time frame to around 2-3 hours also. Okay, so let's get started. I am starting off assuming that you people will start from 7th of November. So, firstly, I have allotted arithmetic to 7th of November to 10th of November. That means what? 7, 8, 9, 10. I have given it 4 days. This is a very long schedule and the longest of all the time frames I have given because arithmetic forms the basic, the heart and core, not just for the CAT examination but also for the XAT examination. So, इसके लिए हमने 4 days रख दिया है easily. Okay. नाउ दिस मीन्स 5 into 4 20 आवर्स की प्रैक्टिस आपको चाहिए अरिथमेटिक के वेरियस सेक्शंस में. यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस मैंने अलग से रखा है. दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस को आपको अलग से फोकस करना है बट अलोंग विद इट द अदर अरिथमेटिक टॉपिक्स लाइक आपके SICI हो गए, परसेंटेजेस हो गए, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, all these things come in arithmetic and you need to pick up one, two topics every day and do as many questions as you can based on your capability. But the amount of time invested minimum should be 20 hours in arithmetic section. And this will not only help you in the XAT examination, but also for the other exams for which you have filled forms, including CAT. और उसे ध्यान में रखकर ही मैंने arithmetic को ऊपर रखा है. And then we have vocabulary, 2 days of vocabulary. That means 10 hours of vocabulary. Is it enough, ma'am? Does not, this question might be coming in your head कि क्या ये enough है? क्या इतना करना is enough? Well, of course, nothing is enough in this world, but still, vocabulary की जड़ तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है. वोकैबुलरी हम डेली सीखते हैं बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट दैट आप कोई क्वेश्चंस देखोगे नहीं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पूछा जाता है एंड डायरेक्टली कूद जाओगे. नहीं, इन 2 दिन में सिर्फ वोकैबुलरी करने का मतलब है वी आर फोकसिंग आवर एंटायर ब्रेन इनटू what can be the possible type of questions, what has been coming in the past years, what is the pattern, how can we crack it, things like that, everything. Okay. And if possible, I'll definitely make videos on the same so that you can get support from this channel as well. Then we have profit and loss, 2 days. So 2 days hectic profit and loss, that means easy, medium to difficult level profit and loss, because profit and loss has been seen as one of the most favorite topics of the QA part.
इन दैट एग्जामिनेशन। तो इसे ज्यादा फोकस देना जरूरी है। देन वी हैव वन कंप्लीट डे ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लाइक जस्ट इमेजिन 5 hours of decision making in a complete day would mean so much of strategy added in one day. And that is important because until and unless आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो एक दिन में बैठकर, आपके अंदर वो पेशेंस नहीं आएगा to solve the seven, I mean, whatever, 7 sets are given to you approximately in the exam, 7 or 8 sets. So एक साथ बैठकर अलग अलग टाइप के 7 8 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पेशेंस आपको तभी आएगा जब आप घर में बैठकर एटलीस्ट 4 5 घंटे अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि एक टाइम के बाद माइंड सैचुरेट हो जाता है, तो उस सैचुरेशन लेवल को हमें ऊपर लेके जाना है. So keeping that in mind, I am giving you one complete day with decision making. All right. So this is how you are supposed to move around with the first set. This was group one. Okay. Similarly, what we will do here is we'll go to the second group. Now, इस बीच आप चाहे तो आप ब्रेक ले सकते हो क्योंकि मैंने आपको स्पेस दिया है. I am finishing my schedule by somewhere around 30th of December. सो अगर आप चाहे तो आप अपने हिसाब से ब्रेक यहाँ पे ला सकते हो, या फिर एनीथिंग हैपेंस, सो आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ बफर टाइम. Okay, now in the part 2, as you can see, we will then move, we'll give 3 days to algebra because it is very, very essential. Then we'll do a specific type of reverse analogy and analogy जिसपे मैं वीडियो डेफिनेटली बनाने वाली हूँ, and this you have to practice for 1 day. Then we'll do time, speed, distance practice for 2 whole days. That means again easy, medium, hard, all type of questions will be covered under the same. And then this is very interesting. Now please try and understand that अब GK and current affairs पे fully focus करने का time आ गया है. Please don't think that exam से एक हफ्ते पहले आप स्टैटिक जीके की कोई बुक को रट्टा मार के चले जाओगे एंड आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे. बिल्कुल नहीं. दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड एट द सेम टाइम वेरी स्मार्ट. And at the same time, they don't expect a memorizing machine. उन्हें memorizing machine कंप्यूटर में मिल जाएगा. उन्हें आपकी जरूरत नहीं है. उन्हें आपकी जरूरत है to know and check on smart people. And how will you prove yourself to be smart? By reading the current affairs. Every day 10 pointer current affairs are uploaded on the Instagram channel. So अगर आप Instagram follow नहीं करते हो तो जाकर जल्दी से कर दो. And Instagram पे you will be getting the current affairs and उससे related static GK. Please let me tell you, ये static GK completely related होगा. For example, आज मैंने मेघालय की कोई न्यूज डाली, मेघालय में कुछ न्यू हुआ, तो मैंने अबाउट मेघालय एक पैराग्राफ आपको दे दिया. That will be static GK supporting the current affairs. And of course, they will ask you static GK supporting the current affairs only. Suppose करो SpaceX कब originate हुआ था, ये आप क्यों पढ़ोगे? आप ये तभी पढ़ोगे जब SpaceX ने आज ही कोई मिसाइल लॉन्च की है इस तरह से. तो ये चीजें हमें स्मार्टली हैंडल करनी है. इसके लिए आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है ही, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं. वील ऑल्सो ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन इट एज मच एज पॉसिबल so that you will stay in continuation. Similarly, this is group 2. Now we come down to group 3 where we see that we are giving 2 days to linear and quadratic equation, 2 days to poem based RCs. RCs की प्रैक्टिस तो आप करते ही आ रहे हो कैट के लिए. If you are giving only that, then these 2 days, one day give it to poem based RCs and one day give it to normal based RCs. जहाँ सिर्फ बैठकर 5 घंटे आपको RCs बनाना है. Now DI based questions are multiple. Okay, there are some pure DI based questions like table based, combination based questions. तो उनका आपको 2 days मैंने दिया है so that आप हर तरह की टेबल को प्रैक्टिस कर सको, हर तरह के चार्ट को प्रैक्टिस कर सको, हर तरह के ग्राफ को प्रैक्टिस कर सको. स्कैटर प्लॉट उनका बहुत फेवरेट है. रिमेंबर दिस, दे ऑलवेज गो फॉर स्कैटर प्लॉट क्वेश्चंस. ओके, वन सेट डेफिनेटली. सो स्कैटर प्लॉट, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट, स्पाइडर चार्ट, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स एंड प्लॉट्स को प्रैक्टिस करना है. 2 days दिया है. एंड देन अगेन अ डिसीजन मेकिंग सेट. Then in G4 you see geometry, para completion, number system, and again a GK and current affairs day where you will sit for 5 hours and try to accumulate as much as you can based on monthly, because बहुत लोग ऐसे होंगे अभी भी जिन्होंने करंट अफेयर्स को फॉलो, जो करंट अफेयर्स रेगुलरली फॉलो नहीं करते, तो उन लोगों के लिए ऐसे स्पेशल डेज ऑफ जीके एंड करंट अफेयर्स बहुत काम करेंगे, जहां पर आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो ऑन अ मंथ वाइज. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 2022 जनवरी
February, March, April. You can do 4 months, 6 months, whatever your capacity is in one day. उससे रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स देखो कि उस मंथ में क्या हुआ, एंड उसी से रिलेटेड खुद भी चाहो तो आप सर्च करके देख लो कि ओके, मैंने इसमें पढ़ा था कि होम मिनिस्टर ने ये किया, तो होम मिनिस्टर के बारे में 3 लाइन, उस तरह से इस कंपनी ने ये मर्जर किया तो दोनों कंपनी के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री। इस तरह की चीजें आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर कर देंगी। देन वी हैव आवर G5 and G6 which are interrelated. Okay. Now here we see trigonometry coming as a new part which might not be useful in the XAT, but I mean might not be useful in the CAT, but you can see the date in which I have added it is 7th of December. So तब तक तो आपका CAT जा ही चुका होगा। उसके बाद we'll have grammar, which is again as you see after CAT, and then modern maths, and then decision making, critical reasoning, and logic based DIs. Okay, again 2 days for DI practice all over again. नाउ ब्रेकअप कैसे है मार्क्स का, वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगी, इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। वी कैन टेक अ ब्रेक फॉर वन डे कंप्लीटली इन द मिडल, ठीक है, आफ्टर स्टडिंग फॉर कंटिन्यूअसली सो मेनी डेज, almost more than a month, and then we will switch on our revision mode. Now in the revision mode what are we going to do is we are going to take topic tests. Okay, इस बीच अगर आपको कभी मॉक देने का मन करे तो आप डेफिनेटली दे सकते हो, बट यू ऑल नो दैट ज्यादा से ज्यादा हमें 5 मॉक्स मिलते हैं फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट. So if you want to use that prudentially, you can use it towards the end, and if you want to use it or try to give more mocks, then you can use the PYQs as the mocks as well. Okay, so topic tests of group 1 will be conducted on 21st. It can be a long test also, guys. You can keep a long test because आपको anyways 3 hours बैठने की practice करनी है, थोड़ा और भी, क्योंकि ऐसे है तो द टाइम एक्सटेंड्स, आई थिंक 10 minutes और 15 minutes, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. सो आपको 3 hours मिनिमम बैठने की प्रैक्टिस तो करनी ही है. सो दैट्स व्हाई ट्राई टू कीप दिस टॉपिक टेस्ट लॉन्गर. ओके, एंड देन एनालाइज एंड रिवाइज इट फॉर द नेक्स्ट डे. सी कि आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हो, लुक एट इट. मैंने इसको काफी ज्यादा आरामदायक रखा है. इफ यू कैन सी इट्स फ्लेक्सिबल एंड इट्स नॉट दैट कि ओ माय गॉड पूरे दिन तो इसी में चले जा रहे हैं, हम कुछ और नहीं कर पा रहे, मुझे काम भी करना है, मुझे पढ़ना भी है अपने कॉलेज के लिए, तो ऐसा कुछ भी है तो वो आप अपना आराम से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. काफी ज्यादा रिलैक्स्ड रखा है मैंने इस साइड में, एंड जैसे जैसे आप एग्जाम के करीब आते हो यू शुड बी मोर काम एंड रिलैक्स्ड. ओके, सो here, you give the test one day, see your answers, analyze it where you went wrong, and the next day you can actually work on it. You can see कि जहाँ आपकी गलती हुई थी वहाँ improvement कैसे हो सकता है. And the same will happen for a couple of other groups also. And once you are done with all of it, you can start, give again mocks and analyze it, or go through the things which you find you are not good at. इस तरह से you will still have 7 days in hand to work over the things you want to work over, to revise the concepts if you want to revise anything like that. मैंने बफर डेज भी दिया है, हो सकता है इस बीच कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ लोग किसी दिन पढ़ नहीं पाएंगे, थिंग्स लाइक दैट. ओके, सो इसीलिए कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड आई हैव गिवन यू अराउंड 7 to 8 days of buffer time. So that is more than enough for anyone who's planning for a examination, and 60 days ahead. And yes, this is the most essential thing. ये आपका मैक्सिमम 1 hour ले सकता है, मैक्सिमम 1 hour ले सकता है, और मिनिमम एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड. So just try to think and understand how much time would you take to solve one RC and go through its answer and find out where you went wrong. Maximum 10 minutes, like होना तो नहीं चाहिए, but this is the maximum time frame you would take to analyze, I mean read, answer, then check the answer, and then analyze your mistakes. One RC, only 10 minutes. Then the 10 pointer CA and related GK जो आपको रोज इंस्टाग्राम पे मिल ही जाता है, वो देखने के लिए आपको मैक्सिमम 5 minutes लग सकते हैं, उससे ज्यादा लग ही नहीं सकते, even if you read each and every point and try to memorize it. Similarly, solving one DI set can also take you 10 minutes maximum, and going through the solution also. 5 VA questions means any verbal ability questions. Now, in this section, I would recommend you to go by PYQ. Even in RC part also, if you wish. If you are only targeting that, go by PYQs. Okay.
Take any RC from the PYQ, take any 5 questions of verbal ability from the PYQ, and take any 5 random questions of QA from the PYQ. You are not able to solve it, कोई बात नहीं. If you are not able to solve it, read through its solution and देखो उसने कैसे solve किया है, कौन से formulae लगाए हैं, क्या concept लगाया है. This will take you 10 minutes each for solving 5 questions and going through its answer. And same, one DM set, so of course you have to go by PYQ because DM और कहाँ से मिलेगा? I have a source as I've been telling in the other videos. I'll definitely come live or release a video for the same. Okay. So all these things will take 10 minutes of a maximum. So 10, 10, 10, 10, 10, 50 minutes and 5 minutes over here. So 55 minutes is the maximum time you should actually give in doing this activity. But still, once you do it for 3-4 days regularly, आपका time frame घटने लगेगा and आप ये सब कुछ 35 minutes में करने लगोगे. But still, if you want to put in 1 hour extra, you can add in more number of questions. You can start doing 2 RCs. You can start doing 2 DM sets one day. इस तरह से अपना number fluctuate करते रखना. But this is what you have to do every day. This being done every day over the period of 60 days will make sure that you are absolutely ready for the examination and आपके दिल दिमाग दोनों में सिर्फ एक ही चीज घूम रही है वो है एग्जाम. And then this will definitely help you in getting your desired percentile. All right, so this was all about this video, guys, a complete detailed planner. इससे related कोई भी doubt, कोई भी questions हो, so feel free to ask in the comment section or DM me on Instagram, Telegram, कहीं पे भी connect कर लो, no issues. I will answer you within a day. And that's all for this video. I hope you all liked it. If you liked it, you know what to do. Of course, subscribe to the channel if you are new, and if you're already a part of the channel, a big thank you. Please like this video and share it with more and more people so that सबको पता चले कि प्रियाशा दास ने XAT 2023 easy बना दिया है. All right, bye bye everyone. Thank you so much for watching.